चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए, कल का जो होमवर्क एग्जाम्पल है वो एक बार दिखा दीजिए। व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज यू हैव प्रिपेयर्ड? So we say asset is purchased in year one. The asset has a two component, 200K, 100K, total 300K. Useful life of 5 years. So your depreciation is 40,000 and 20,000. Okay. So when you prepare, the entry is fixed assets debit to cash or accounts payable. Perfect. Annual depreciation expense to accumulated depreciation each year. Fine. Entries are okay. Now for the depreciation entries, can you tell me what is the impact on A is equal to C plus L? And can you also put component 1 and component 2 in column G and H, row number 9, and put a WDV values or a book value at the end of each year? Mm. So you can put component 1 and component 2, and what is the book value at the end of each year. So yeah, beginning values are 2 lakh and 1 lakh respectively. What is the value at the end of year 1? Okay, and what is for asset 2? Sorry, component 2. Perfect. Can you also prepare A is equal to C plus L impact for depreciation? And I think here from here आप disposal का entry खुद बनाओगे. So if you are right for this last step, A is equal to C plus L, then disposal is done. You just have to prepare the entry. Uh, So when you depre- post the entry, dep- depreciation expense debit to accumulated depreciation, what is the impact on A is equal to C plus L? debit, the depreciation expense decreases equity and Decreases equity, perfect. accumulated depreciation decreases asset. Increases asset कैसे? Decreases. डिक्रीजेस एसेट्स. चलिए परफेक्ट है. अब आपको खुद एंट्री बनानी है. वैल्यूज अगर ऊपर नीचे होती है तो कोई दिक्कत नहीं है. सपोज एट द एंड ऑफ ईयर 3, दैट मींस हाईलाइट द सेल H14. जब आपका बुक वैल्यू है $40,000, एट द एंड ऑफ ईयर 3 you have decided to sell the component 2 for $48,000. So what should be the entry? आप logically entry खुद बनाओ. When you are selling the asset, asset is going down, cash is coming in. Also आपके पास एक और account है which is accumulated depreciation. So what happens to that account? Just prepare whether there is a profit or loss. Just think from all the angle and try to prepare a one journal entry for this.
So cash debit 48 looks good. Your fixed asset is 80. So now that you have to think through. So when you are at the end of year 3, what is the book value of your asset? Suppose think this is your car. You purchased your car for $1 lakh. Now at the end of year 3, you have already depreciated it for 3 years. Now the book value of your car is 40,000. So and you sell your car for 48,000. So should you compare your Yeah. profit or Oh, loss sorry, with it's 40. I thought it's 80. Uh, right? So what is this profit or loss? Now plug is on credit side, so this is a gain. Now this is a perfect entry. However, accounting purpose, we will just do a little bit bigger entry. So जैसे कि अभी मैंने आपको पूछा कि what is the impact of A is equal to C plus L for depreciation. So you say accumulated depreciation decreases the asset. Now can I say in accounts हमने basics में सीखा था कि whatever account you open, eventually they have to be closed. So आपने एक अकाउंट ओपन कर दिया है accumulated depreciation का बैलेंस शीट में, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा कभी ना कभी. Can you draw a balance sheet on the right hand side for component 2? Fixed asset कैसे दिखेगी बैलेंस शीट में for year 1, year 2 and year 3? Can you just prepare a extract? I think वहां से आपको एंट्री और समझ में आएगी. Yeah, just prepare a extract of balance sheet for year 1, year 2 and year 3. How fixed asset for component 2 will be presented. For asset 1, sorry, asset 2, your depreciation is 20,000 annually. Okay. Now year 3, what is your accumulation? 60,000. Yeah, 60,000 is your accumulation. Now can I say आपको जो जो accounts open है year 3 पे वो accounts close करने पड़ेंगे. Now what entry you have prepared is debit cash 48,000. That is okay. Credit fixed asset. Now that is okay because your net value of the fixed asset is 40,000. 1 lakh minus 60,000. But can I say when you have created the accounts, you have created accumulated depreciation as a separate account? So you have to first close that account. So can I write down another entry? Can you scroll down to row number J20? Let's create a new entry. End result will be the same. But what if I say debit cash 48,000, credit fixed asset. Now fixed asset right now in my balance sheet is at $1 lakh. So let's credit 1 lakh because I have to close the accounts the way it are open right now at the end of year 3. So year 3, my fixed asset has a 1 lakh. Now there is a accumulated depreciation for 60,000. It has a credit entry. So to close, you have to debit. So let's put debit accumulated depreciation 60,000. So your net fixed assets now are again back to 40,000. जो आपने ऊपर की एंट्री में किया था 1 lakh credit minus 60 debit, that is a net 40 credit. But I have just split the entry into two way. Now what is the plug? So the plug is coming on the credit side 8,000. So this is a gain on sale of fixed asset. So the last entry will be credit gain on sale, which is $8,000, which is your plug. बेसिकली आपने 40,000 का बुक वैल्यू जो था एसेट का वो आपने 48,000 में सेल किया.
सो जस्ट आपका एंट्री परफेक्ट था, वी जस्ट स्प्लिट द एंट्री बिकॉज आपका एसेट अकाउंट अलग चल रहा है बैलेंस शीट में और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग चल रहा है बैलेंस शीट में. डज दिस मेक सेंस टू यू? Yes. चलिए एक और प्रिपरेशन आप खुद करो. लेट्स से योर एसेट नंबर 1 एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर, जब आपका बुक वैल्यू था 40,000, you have sold this for let's say 25,000. The asset one at the end of year 4 आपने 25,000 में सेल किया. Let's prepare a detail entry. अगर आपकी सही हो गई तो हम लोग कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं बनाएंगे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू देन अगेन हम लोग पहले बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे. Perfect. So 15,000 is the right loss. So can you now stop sharing? I'll share my screen. The disposal topic concepts are cleared. आपके बुक में जो एग्जांपल्स है वो एक बार देख लेते हैं. So first of all हमने कल एग्जांपल एक छोड़ दिया था. Let's go to that example first. Illustration number 1 quickly देख लो and then we will go to another example जो आपके बुक में है. So assume that the Leicester company sells the machinery A in 10 years for 2,60,000. So cash account debited 2,60,000. Now ये हमने continuous example देखा था. So let's go back to the previous example. So we had all these details available जहां पर company $45,000 का depreciation provide कर रही है on the asset. So let's just see the mathematical calculation. Hypothetically आपका जो asset A है, so they have sold out the asset A. Asset A का cost था 5,50,000. So what they have done, they have credited full asset A for 5,50,000. So now what is the plug? The plug is accumulated depreciation. अभी यहाँ पर हमने क्यों ये प्लग लिया accumulated depreciation का? Because the company is depreciating the group asset. They are not accounting the component asset. So वो क्या कर रहे हैं? A plus B plus C को क्लब करके एक asset गिन रहे हैं and they are calculating a single depreciation of 45,000. So now because you have a single depreciation, अब split नहीं कर सकते कि मेरी कार का depreciation कितना है और मेरे engine का depreciation कितना है. वर्सेस द एग्जांपल वी जस्ट डिड, उसमें हमने स्प्लिट किया था कि मेरा कार का डेप्रिसिएशन इतना, इंजन का इतना. सो वी हैड अ क्लियर इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सो वी कुड कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट. लेकिन जब आप ग्रुप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हो एंड यू डोंट हैव अ सेपरेट डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अवेलेबल, तो हमेशा आपका जो प्लग बनता है वो बनेगा आपका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन and you will not be recognizing any gain or loss on disposal of the component when a group depreciation method is used. ठीक है, illustration 1 क्लियर है? कैलकुलेशन कैसे होगी
Tip सो आपने accumulated depreciation. आपने कैश किया 2,60,000 का, सो कैश इज डेबिटेड। आपने ग्रुप में से एक मशीन ए को सेल कर दिया, मशीन ए का कॉस्ट कितना था, 5,50,000। So what you did, a cash account debit 260, asset account credited 550. So balancing figure goes towards your accumulated depreciation. We दो won't बार calculate any gain or loss. नहीं, why? Because आपने इसको एक ग्रुप डेप्रिसिएशन गिना हुआ है। सो इन दिस एग्जांपल व्हाट वी डिड कि हमने इसको अलग अलग डेप्रिसिएशन नहीं गिने थे ए बी और सी के। व्हाट वी डिड, वी कंबाइंड एंटायर एसेट ऑफ 7,20,000 and we combined a useful life of 16 years and we decided a combined depreciation of 45,000। नाउ जैसे आपने इसको कंबाइन कर लिया, नाउ मशीन ए बी और सी का इंडिविजुअल कोई वैल्यू नहीं रहा फ्रॉम डेप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो यू डोंट नो कि आपने जितना भी डेप्रिसिएशन 10 साल में प्रोवाइड किया उसमें से कितना एसेट ए के लिए, कितना बी के लिए, कितना सी के लिए। व्हाई? बिकॉज यू डिड अ ग्रुप डेप्रिसिएशन। इसकी जगह अगर आप कंपोनेंट डेप्रिसिएशन करते हैं, द एग्जांपल वी डिड इन गूगल शीट, तो आपके पास मशीन ए का कॉस्ट होता, डेप्रिसिएशन होता, बुक वैल्यू होता, फिर सेल वैल्यू होता, तो हमारे पास गेन और लॉस होता। सेम में मशीन बी का कॉस्ट होता, डेप्रिसिएशन होता, बुक वैल्यू होता, सेलिंग प्राइस होता, गेन और लॉस होता। So if you do a component depreciation only and only then you will have a gain or loss on sale of asset. Group depreciation में you cannot calculate the accumulated depreciation for a component directly and hence the balancing figure will always be your accumulated depreciation. Okay. चलिए एक और एग्जांपल है आपका, वो देख लेते हैं, then we'll go to a final concept of this chapter. So this is the entry which we just saw. जब आप एसेट को सेल करते हो when it has a useful life continuing, तो हमारे एग्जांपल में हमारे पास एसेट का 5 साल का यूजफुल लाइफ था। एक एसेट को हमने थर्ड ईयर में बेचा, एक एसेट को हमने फोर्थ ईयर में बेचा। सो व्हाट एंट्री वी पास्ड, वी से कैश अकाउंट डेबिटेड, यस। वी से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, यस। एंड वी से एसेट अकाउंट क्रेडिटेड। अब अगर आपका क्रेडिट साइड पे डिफरेंस है तो ये है आपका गेन, अगर आपका डेबिट साइड पे डिफरेंस है तो ये हो गया आपका लॉस। सो एग्जैक्टली दिस एंट्री यू जस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द गूगल शीट। ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कि क्या होता है अगर आपने 5 साल पूरा एसेट को यूज कर लिया और उसके बाद अगर आपने एसेट को बेचा। नो नीड फॉर दिस सेक्शन अगेन। आप सिंपल यही कॉन्सेप्ट लगाओ कि आपने पैसा कितना लिया, आपका डेप्रिसिएशन कितना हुआ, आपका एसेट कितने से गया, प्लग विल बी योर गेन और लॉस। नो नीड टू चेक अनदर सेक्शन फॉर दिस। 4.1 section is a golden section. This will hold good for all your disposal entries. What is 4.2 then? सो 4.2 इज सेइंग कि अगर आपने एसेट का यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद एसेट को बेचा। सो लेट्स क्रिएट वन मोर एग्जांपल वेरी क्विकली। सपोज आपने एसेट 2 है, ये बेचा एट द एंड ऑफ ईयर 5। सो एसेट 2 इज सोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर 5 फॉर 10,000 लेट्स से। आपका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिटेड 10,000। व्हाट इज योर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो आपने 5 साल का डेप्रिसिएशन कितना प्रोवाइड किया है, 1 लाख का। What is your asset that is going out, again 1 lakh. So now what is the plug, the plug is on credit side, so this is a gain on sale of asset. So basically जब आप asset को पूरा यूज कर लेते हो, in that situation your accumulated depreciation and your asset which is going out, they are always the same value because आपने 100% depreciation claim कर लिया है over the 5 years. Again no need to get confused कि ये एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। So this is the same entry they are using, accumulated depreciation account debited to asset account credited. लेकिन आपका कैलकुलेशन ऑलवेज सेम रहेगा, आपने कितने में बेचा उतना कैश अंदर आएगा और जो भी प्लग होगा वो गेन या लॉस हो जाएगा। चलिए इम्पायरमेंट पे बाद में आते हैं। सो वी हैव टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट नाउ। इम्पायरमेंट तो पहले उस पे आते हैं, फिर ये एंट्री पे बाद में आएंगे हम लोग। Now one last concept which is impairment, very interesting concept. Mathematics भी मजा आएगा। So let's just prepare a new sheet and let's have a impairment concept. तो सबसे पहले तो impairment होता क्या है? This is called a permanent reduction in the value of the asset. Let's understand an example, ये होता क्या है। Suppose आपने एक बिल्डिंग परचेस किया, let's say you are running a CPA firm और आपने एक अपने सीपीए का ऑफिस परचेस किया फॉर $50,000।
Now suddenly government came and say, look boss, COVID is going on. So for next 10 years, nobody will file a tax returns. Nobody will pay the income taxes. So now can I say earlier the demand for the CPA was too much. Now for next 10 years, the demand will drastically going to reduce because nobody will go towards the CPA for tax return. He can still do other work, but CPA का जो tax return का demand था वो significantly down हो जाएगा. So whatever asset he invested, the value may go down. Yeah, let's take another example. For example, let's say you own a taxi, and let's say a COVID outbreak came out, and there is a 3-year ban on people to do a tourism now because of the virus. Now, can I say the worth of your taxi, which you think that you will recover your money, will now go down because there will no longer be a demand for your product because of the some external scenario. So this is called the impairment, where there is a permanent reduction in the value of your asset. Your asset is impaired. Your asset cannot generate a revenue for your business anymore. So it is called the impairment. So impairment को हम टेस्ट कैसे करते हैं? When there is a internal or external sites available. So for example, I just give an example, COVID is there. So there is a possibility that your business might be hit. Suppose there is a global recession, your business might get hit. So whenever there is an internal or external indication, let's say you have a one factory and the fire burnt out, your 80% machinery are now scrapped. So it's an internal sign that your machine may not now generate a revenue for your business, or it's an external sign, a governmental policy, a COVID type of virus or recession. So whenever there is an internal or external signs which says that your asset may not generate the value for you in near future, so it is called impairment. एक एग्जांपल पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग ये फॉर्मूलाज पे देखेंगे. The formulas are not that difficult, it's very easy to understand. Suppose आपने एक फैक्ट्री लिया हुआ है and the factory has a one machine. So let's just say a one machine. The machine has a cost of 100,000 and you decided that useful life will be 5 years and the machine is going to produce, let's say, a 50,000 units over next 5 years. That is a total 2,50,000 units. So आपने एक मशीन में इन्वेस्ट किया, मशीन का कॉस्ट था 1 लाख and machine is going to produce 50,000 units every year for next 5 years. Now, let's say you started depreciating the machine. So at the end of year 1, you had a cost of $1 lakh. You charged a depreciation, let's say, of $20,000, and your closing value of your asset net of depreciation is $80,000. You are doing the second year, again your value is $80,000. You do a depreciation, you had a value of $60,000. At the end of year 2, everything is good. You are very happy that your business is running fine, machine is producing the units, and revenue is getting generated. Now let's say suddenly at the end of year 2, here, Mr. Government that came and say that whatever goods you are producing, they are not fit for the safety purpose and we are banning you. You cannot sell this product anymore. Now, can I say the machine which had still a capacity to generate 1,50,000 more units, the machine is no longer going to be in use because of the external restriction. So the value of your asset, which is standing at $60,000, is no longer $60,000 now. Why? Because this machine cannot generate the revenue for you in future. So at this moment, when there is an external evidence available, you have to test for impairment. Now, how you do a test of impairment? You say that how useful your machine is. The question is, how useful is your machine? Usefulness can be driven by two criteria. Number one, what is the value in use? So if you continue to use the machine, how much revenue it can generate? Or if you sell the machine today, how much value it can generate? So whichever is higher is your revised value of your machine. So let's do a hypothetical scenario. Government has done a ban, 100% ban. You cannot use this product anymore. So value in use is zero because you cannot sell any product anymore which are manufactured from this machine.
But if you sell this machine today in the open market, there are people who are ready to buy for $35,000. So what we are saying that because your machine, which had a book value of $60,000, now it has lost its value because of the some external indication, and your value today, which can be recovered from the open market, is only $35,000, which is higher of 0 or 35,000. So 35,000 is called a revised carrying value of the asset, and the difference between book value of the machine and the revised carrying value is called an impairment loss. So this is your impairment loss, which you have to recognize in your income statement. Entry is exactly the same how you record a depreciation. So your entry is impairment loss account debited to accumulated impairment loss. It works same way. This is generally called a accelerated depreciation because your machine has lost its value because of the external or internal indication. Mathematics में कोई भी doubt conceptually what is impairment? Impairment loss is a P&L account. Yes, this is impairment loss goes to a P&L. This is just like a depreciation. So just treat this as a depreciation for understanding purpose, and treat this as a accumulated depreciation for understanding purpose. So your P&L में जाता है just like depreciation, balance sheet में जाता है just like your accumulated impairment loss. Accumulated depreciation जैसे जाता है वैसे ही accumulated impairment loss जाता है. So how your balance sheet will look like now? So let's draw a balance sheet. Let's say a year one and let's say year two. So year one you had a cost of 1 lakh. So 1 lakh is the cost. Under year one you had an accumulated depreciation of 20,000. So you had a book value. Let's just put you had a book value of 80,000. Year two you had an accumulated depreciation of 40,000, but also you have now accumulated impairment loss. This is for 25,000, and your value of your asset is now reduced to $35,000. So this is called an impairment loss testing. क्लियर है कब करना है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और कैसे करना है बुक में चलता है. वी विल सी ऑल द टेक्निकलिटीज बट एवरीथिंग विल फॉल इन दिस पर्टिकुलर शीट ओनली. This is if we are keeping the machine with us. Yeah, we are still keeping the machine, we have not sold, we are just assessing, we are testing for the impairment. So again, impairment आप हमेशा टेस्ट नहीं करते हो. You test only and only if there is internal or external indicators are available which says that your asset might have lost its value. So suppose for example अगर आप स्कूल चला रहे हो बीच में, जैसे कोविड, why I'm taking COVID example because that's the where everything was impacted. So let's say आपने एक स्कूल ओपन किया था assuming that 1 lakh students will come. Now suddenly COVID came and everybody went to a online education, and let's say 95% of the children have changed their school to the school who is providing online education. Now कहना इसे जो आपने estimate किया था कि स्कूल फीस से जो भी आपकी एसेट की रिकवरी होगी, that is not going to happen anymore. So that's the permanent reduction in the value of your building. आप हमेशा फिक्स असेट्स क्यों इन्वेस्ट करते हो? फिक्स असेट्स आर दोज असेट्स व्हिच कैन जनरेट द रेवेन्यू फॉर यू इन फ्यूचर. चाहे वो ऑफिस बिल्डिंग है, आपकी फैक्ट्री है, आपका मशीन है, आपका फर्नीचर है, all these things are used to generate the revenue for your business. If the asset cannot generate the revenue for your business, then it is no longer required in your business. आप उसको अभी सेल नहीं कर रहे हो, but you cannot carry it at a value which is expected to recover. आपको उसको वैल्यू को नीचे लेकर आना पड़ेगा जो उसकी आज की मार्केट प्राइस है. बिकॉज जैसे कि सेम एग्जांपल में वी कैन नॉट से टू इन्वेस्टर की आपका जो मशीन है उसका वैल्यू अभी भी 60,000 है बिकॉज आई एम गोइंग टू रिकवर द डेप्रिसिएशन ओवर नेक्स्ट 3 ईयर. नो, योर एसेट इज नो लॉन्गर इन यूज नाउ बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन. या तो आपको मशीन को वैसे का वैसा ही रखना पड़ेगा, दुकान बंद कर दो, घर पे चले जाओ, या आप इसको स्क्रैप में बेच दो. सो व्हाट यू विल प्रेफर कि इसको स्क्रैप में बेच दो, जितना भी मेरे हाथ में आएगा वो आएगा. सो व्हाट आई कैन गेट इन द मार्केट, आई कैन गेट 35,000. So the real worth of this machine is not $60,000 now, but it's a 35,000. So I need to return down my value of my asset, which is called a one-time impairment loss. Okay. चलिए एक बार बुक में देखते हैं. So let's go to the theory section first. So यहाँ ऊपर कुछ है नहीं है, ठीक है. So impairment of property, plant and equipment.
So what we are saying, the carrying amount of fixed asset held for use and to be disposed of need to be reviewed whenever there are event or a changes in the situation that indicate that carrying amount of your fixed asset may not be recoverable. So as per our example, when there are indication which says that carrying value of $60,000 for machinery may not be fully recoverable now, so there is a indication for the impairment. तो आपको क्या चेक करना है, what is my recoverability of the asset now? So when the asset is tested for the impairment, the future cash flow expected to result from the use of the asset और इट्स इवेंचुअली डिस्पोजिशन नीड्स टू बी टेस्टेड। तो हमने भी यही चीज की, या तो हम चेक करेंगे वैल्यू इन यूज कितना है, मतलब अगर हमने एसेट को यूज करना कंटिन्यू रखा तो ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, या अगर हमने इसको सेल आउट कर दिया विच इज डिस्पोज कर दिया तो ये कितना वैल्यू जनरेट कर पाएगा। सो इट्स द सेम लाइन what we are saying for testing impairment, we have to check two things. Number one, future cash flow, future revenue from the use of the asset, और अगर हमने इसको डिस्पोज कर दिया तो हमें क्या वैल्यू मिल सकता है। तो हमारा एक चार्ट है नीचे, दिस चार्ट इज अ परफेक्ट चार्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो फ्यूचर कैश फ्लो है विच इज हायर, लेट्स से यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, and we can say that we are going to generate another 1,50,000 units in future, we are going to generate the positive cash flow, positive revenue, then impairment is no longer required for a testing at all. तो अगर आपका जो फ्यूचर के नेट कैश फ्लो है वो अगर आपकी कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट से ज्यादा है, then there is no impairment loss, you are not supposed to do any testing. लेकिन अगर ये नेगेटिव है, मतलब कोई इंडिकेशन है कि आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते हो, या आपका एसेट में कोई बैन आ चुका है या कोई रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, वेर योर एसेट नाउ कैन नॉट रिकवर इट्स कॉस्ट, तो आपको इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा। तो आप इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग कैसे करोगे, इधर आप चेक करोगे कि अगर मैं एसेट को कंटिन्यू करूं यूज करना, या तो मैं एसेट को सेल ऑफ कर दूं। So if I say asset held for disposal और asset held for use, मैं दो में से एक ही चीज कर सकता हूँ, या तो मैं एसेट को अपने पास रखूंगा, आई स्टिल ट्राई टू जनरेट द रेवेन्यू, और आई डिसाइड टू डिस्पोज ऑफ द एसेट। अगर मैं एसेट को यूज करना कंटिन्यू करता हूँ तो व्हाट इज माय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर रेवेन्यू व्हिच एसेट कैन जनरेट माइनस इट्स नेट कैरिंग वैल्यू, दिस इज माय इम्पेयरमेंट लॉस। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हमने बोला कि हम कुछ भी जनरेट नहीं कर सकते नाउ बिकॉज द एसेट हैज द नो वैल्यू, इट्स 100% बैन। तो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो हो गया जीरो, हमारा कैरिंग वैल्यू है 60,000। सो इट लुक्स लाइक कि आपका इम्पेयरमेंट लॉस है पूरा का पूरा 60,000। बट होल्ड ऑन, दिस इज नॉट इम्पेयरमेंट लॉस। हमें चेक करना है क्या अगर हम एसेट को बेच देंगे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। So if we dispose of the asset, what money we are getting? So present value of the future cash flow because of the disposal. So in our example, अगर हम इसको dispose of करते हैं तो हमें 35,000 मिलता है। So 35,000 minus carrying value of 60,000. This is called a 25,000 of impairment loss. So 60,000 का लॉस और 25,000 का लॉस, लॉजिक आपका क्या बोलता है कि मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं एसेट को बेच दूंगा, मैं अपना 60,000 का नुकसान क्यों करूं, आई एम हैप्पी विद 25,000 लॉस। सो इम्पेयरमेंट लॉस इज ऑलवेज आइदर यू कैन से अ लोअर ऑफ असेट हेल्ड फॉर यूज और असेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल, या तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड चार्ट में नहीं जाना है, देन यू कैन जस्ट प्रिपेयर माय टाइप ऑफ वर्किंग that calculate what is the value in use or calculate what is the value by selling the machine, take whichever is higher. So this should be the revised carrying value of your asset. आपका अभी का वैल्यू क्या है 60,000, so balancing 25,000 is nothing but your impairment loss which you need to recognize your balance sheet. ठीक है, chart is saying the same thing but just they have made it more complicated than what it should be. चलिए, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट अ वन रैंडम एग्जाम्पल फॉर यू टू प्रिपेयर। बट एक बार पूरा चैप्टर देख लो बुक में, आई थिंक वी आर डन विद द पीपीएनडी, एंड हम लोग थोड़ी देर में शुरू कर सकते हैं इंटेंजिबल एसेट। टिल दैट टाइम आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग वन एग्जांपल फॉर यू फॉर इम्पेयरमेंट होमवर्क। एक बार तब तक आप बैकर का मटेरियल देख लो, एंड देन विद इन 5-7 मिनट्स हम एक बार इंटेंजिबल्स का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड शुरू करते हैं, एंड होपफुली बाय टुमारो इंटेंजिबल्स भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे।
टुमारो मैं इस टाइम अटेंड नहीं कर सकता, पता है। सॉरी। टुमारो मैं इस टाइम अटेंड नहीं कर सकता, मेरे को बताया था। फ्राइडे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। And when we will discuss the doubts on Friday. मोस्टली फ्राइडे करेंगे, एक बार ये पूरा मॉड्यूल खत्म हो जाए ना, उसके बाद हम लोग पिकअप करते हैं अब तक की आपकी जो भी क्वेरीज है। ठीक है सर, जस्ट सेइंग यू हैव परचेज्ड। आप तब तक बुक देख लो, मैं आपके लिए एक एग्जांपल बना देता हूँ। परचेज्ड अ मशीन, लेट्स से इट हैज कॉस्टिंग 2 लाख, useful life is 10 years, now at the end of 6th year। ठीक है, आई हैव प्रिपेयर्ड वन एग्जांपल फॉर यू। सो आई एम जस्ट क्विकली एक्सप्लेनिंग, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना। यू परचेज द मशीन फॉर 2 लाख, यूजफुल लाइफ was 10 year। After the 6th year is done, there was an internal evidence for impairment. I have given you a value in use. I have given you a net selling price, and then you have to calculate the impairment loss. दो कॉन्सेप्ट इसमें और छुपे हुए हैं, which I want you to try first. If not, हम लोग कल इसको एक बार डिस्कस करेंगे। But this is a good example, and once this is done, your impairment is completed. What's a brokerage commission? Yeah, commission. So अगर आप वापस चार्ट पे आओगे, so what we are saying that you are going to check value in use or the net selling price. So net selling price आप कैसे गिनते हो? The selling price minus cost to dispose. अगर आप मेरे फॉर्मूला में देखोगे, so better to use this one. Sell of the machine, net of expenses. The disposal entry for impairment in the book. डिस्पोज नहीं कर रहे हो आप अभी, आप सिर्फ No, इम्पेयरमेंट लॉस कर रहे हो। no, the अच्छा, entry we गुड left. गुड, तो आप ही बनाओगे। सो लेट मी जस्ट पुट दिस, कंपनी हैज डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ द मशीन फॉर फ्री एट द एंड ऑफ ईयर 6 आफ्टर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस। तो आपको पहले इम्पेयरमेंट लॉस का एंट्री बनाना है, उसके बाद एट द एंड ऑफ ईयर 6 कंपनी डिस्पोज भी कर रहा है। आप ही पहले खुद बनाओगे विद अ सेम कॉन्सेप्ट हाउ डेप्रिसिएशन वर्क। इफ नॉट, हम लोग कल इसको साथ में बनाएंगे। ठीक है, क्विकली एक बार बुक देख लो। वंस यू आर डन, वी कैन स्टार्ट विद द इंटेंजिबल। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे बातें करेंगे आज, वी विल नॉट गो इन डिटेल, बट व्हाट आर द इंटेंजिबल, ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं। अगेन अ वेरी वेरी सेम चैप्टर व्हाट वी सी इन पीपीएनडी, जस्ट द चेंज कि ये हम लोग करने वाले हैं इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। I'm done. I'm done. चलिए, सो
Just the way you had a fixed tangible asset, you can have also the intangible assets. Now, intangible assets can be your copyright, trademark, franchisee, patents, goodwill, all these things. Now, generally, accounting standard says कि आपके जो intangible assets है, they are getting amortized either on 15-year mark or a 5-year mark. तो आपको useful life generally question में दी जाएगी, unless you can determine a better useful life as a better judgment. तो अगर आप बोलते हो कि मैंने एक फ्रेंचाइजी ली है, लेट्स से डोमिनोज पिज्जा की, now that franchisee agreement is for 15 years, so you can write off the franchisee cost over 15 year. बट लेट्स से आपने कोई पेटेंट ली है लाइफ टाइम के लिए, नाउ दैट डजंट मीन कि वो पेटेंट कभी एक्सपायर्ड नहीं होगी, बट इन दैट केस द पेटेंट विल बी अमोर्टाइज्ड आइदर ओवर 5 इयर्स और 15 इयर्स, जो आपको क्वेश्चन में क्लैरिटी दे दी जाएगी. सेकंड, अ गुडविल कैन नेवर बी इंटरनली जनरेटेड. गुडविल हमेशा हमेशा आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन से आया है तो ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. व्हाई? गुडविल का मतलब होता है द एक्सेस ऑफ द नेट एसेट्स इन योर कंपनी. तो सबसे पहले नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट इज नथिंग बट योर एसेट माइनस लायबिलिटी. लेट्स से आई हैव अ कंपनी, मेरे पास एसेट है $10 की, लायबिलिटी है $2 की, माय नेट एसेट्स और इक्विटी इज $8. आई कैन नॉट डू अप्रिसिएशन फॉर माई सेल्फ एंड से दैट कि मेरा जो बुक वैल्यू है इक्विटी का या बुक वैल्यू है नेट एसेट्स का $8, उसकी मार्केट में प्राइस है $28, so I am creating a $20 of goodwill. That is not allowed. So goodwill can never be internally generated or a self-generated. However, if you are doing a business combination, then yes, goodwill can be recognized. So for example, आपका एक CPF firm है, मेरा एक CPF firm है. I have decided to take over your CPF firm. अब आपका CPF firm का एसेट है $10 का, लायबिलिटी है $2 का, दैट मीन्स आपके CPF firm की इक्विटी है $8 की. Now to purchase your CPF form, जिसका वैल्यू है $8, I am going to pay you, let's say $28. So if I'm actually paying out a cash, which is more than your net assets, then I can recognize a $20 of goodwill, which is arising out of the business combination. And goodwill has to be amortized over a period of 5 years. So again, इसको हम लोग कल डिटेल में देखेंगे that what assets can be internally developed and what assets can never be internally developed. इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं कि if there is a intangible asset with unlimited life, तो उसको हमें हर साल इम्पेयरमेंट के लिए टेस्ट करना पड़ेगा. अगेन हम कल देखेंगे. इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट अगेन सेम है. सो हाउ यू कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट? You check that what is the revenue that can be generated from the intangible asset minus your cost of intangible asset. If it's a positive, then there is no impairment loss. However, if there is any indication कि आपका जो goodwill है, patent है, copyright है, that has damaged now, and you cannot generate any cash flow or revenue in future, then you have to test for the impairment. Again, आप दो चीज टेस्ट करोगे. क्या अगर आप intangible asset को continue करते हो, तो what is the रेवेन्यू और अ कैश फ्लो इट कैन जनरेट, या अगर आप उसको डिस्पोज्ड ऑफ कर देते हो इंटेंजिबल एसेट को, सो व्हाट अमाउंट यू कैन जनरेट. सो हायर ऑफ दिस टू अमाउंट इज योर रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू. You will check this revised carrying value with your book value and you get an impairment loss. Exactly the same table which we have done will be applicable for intangible assets as well. Only a change कि अगर आपका इंटेंजिबल एसेट इनफाइनाइट लाइफ वाला है तो आपको हर साल ये टेस्ट करना है. यू कैन नॉट वेट फॉर द इंडिकेटर्स टू कम अप. अगर फाइनाइट लाइफ है देन वेट फॉर द इंडिकेटर्स टू अपीयर. अगर इनफाइनाइट लाइफ है देन यू विल नॉट वेट फॉर द इंडिकेटर्स, बट एवरी ईयर आप इम्पेयरमेंट का टेस्टिंग करोगे. सो दिस इज अ टॉपिक मैथमेटिकली हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. सो टुमारो वी विल जस्ट गो एंड डू अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. इसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर इंटरनली रादर देन परचेज. तो जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हो देन यू इनकर्ड अ लॉट ऑफ कॉस्ट व्हिच आर लेट्स से ब्रेनस्टॉर्मिंग कॉस्ट, पीपल कॉस्ट, फिजिबिलिटी कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट. तो आप जब सॉफ्टवेयर इंटरनली फर्स्ट टाइम डेवलप करते हो तो क्या क्या कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हो, व्हिच मींस इट गोस टू द बैलेंस शीट, और क्या क्या कॉस्ट आपको P&L में लेकर जानी पड़ेगी. And lastly, we are going to see a franchisee accounting. Let's say अगर आपने franchisee purchase की है for McDonald's or let's say Domino's Pizza or Pepsi, then how those kind of franchisee needs to be accounted. कोई different treatment नहीं है, नाम सिर्फ अलग है. It works the same way how your intangible assets generally work.
लेकिन हम लोग इसका एक एग्जांपल डिटेल में देखेंगे वेयर देयर इज ए ऑब्लिगेशन टू रीपे अ सर्टेन डिपॉजिट मनी। लास्ट में है स्टार्टअप कॉस्ट। तो स्टार्टअप कॉस्ट अगेन वी विल कवर टुगेदर हाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्ट वर्क्स, और उसमें अगर आप फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और अगर आपने लीगल चार्टर का फीस दिया है, ओपनिंग फीस दिया है, सेल्स एंड मार्केटिंग का फीस दिया है फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ अ बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट और शेयर्स एंड सिक्योरिटी आप इश्यू कर रहे हो फर्स्ट टाइम, so how those costs are recognized. So basically what we are going to do, we are just going to repeat entire property plant and equipment accounting standard, but this time for the intangible asset सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे कि क्या वैल्यू पे हम कैपिटलाइज करेंगे, हमें अमोर्टाइजेशन कैसे गिनना है। सो फिक्स एसेट में होता है डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट्स में होता है अमोर्टाइजेशन। वहां पर भी इम्पेयरमेंट है, यहाँ पर भी इम्पेयरमेंट है, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सी अ वेरियस टाइप ऑफ इंटेंजिबल एसेट लाइक फ्रेंचाइजी अकाउंटिंग है तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं। एंड अगर आप इंटरनली जनरेट करते हो कोई सॉफ्टवेयर को तो आप कौन सी कॉस्ट को बैलेंस शीट में ले जाकर कैपिटलाइज कर सकते हो और कौन सी कॉस्ट को आपको पीएनएल में लेके जाना पड़ेगा। सो वेरी स्मॉल चैप्टर, मे बी 30-35 minutes on Friday, and this chapter will be done, and then we will take up your queries, and then rec 3 will be done, sorry, far 3 will be done, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे फार 4। फार 4 विल बी अ बिग चैप्टर, इट विल टेक अ टाइम बिकॉज यहाँ पर आपका बॉन्ड्स है, यहाँ पर आपका लीज है। these two are very very tricky, it will going to take a lot of time. Once your FAR 4 is done, FAR 5 again it's a big chapter, it's a consolidation and business combination. यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू डोंट लुक एट द बुक एट ऑल, मैं आपको कुछ मेरे फॉर्मूलाज दूंगा, यू जस्ट हैव टू सॉल्व द प्रैक्टिकल्स ऑफ बुक एंड बैकर, योर आंसर्स विल टाई because everybody has a different treatment to teach the consolidation. It's again a very heavily tested. So 5 will be again a big chapter. एंड देन लास्टली चैप्टर नंबर 6, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डेफर्ड टैक्सेस का, इंटरेस्टिंग वन, नॉट कॉम्प्लिकेटेड वन, हम लोग इजीली कवर कर पाएंगे। एंड देन अ गवर्नमेंटल अकाउंटिंग, सो प्रोबेबली another I will say 40 hours, and we should be good to go to complete the entire FAR syllabus. Bonds, leases, and consolidations are the most tested topics. वो डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा, दे आर लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट। No, in terms of most tested. 100% आएगा आपका कंसोलिडेशन का सिमुलेशन, रेवेन्यू आएगा, कंसोलिडेशन आएगा, डेफर्ड टैक्सेस आएगा, so there are certain standard things which will definitely come. And from the three, from the chapters we have covered, is there a very important topic? EPS, SEC reporting, discontinuing operations, CECL and PPND जो हमने अभी किया, PPND स्पेशली impairment that gets tested. Mm. तो ये सब ऐसा है कि डिपेंड ऑन योर लक कि कितना कॉम्प्लेक्सिटी, एमसीक्यू में तो सब कुछ आएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट सिमुलेशन। तो सिमुलेशन में रेवेन्यू का एक सिमुलेशन फिक्स रहता है, एंड यू हैव कंसोलिडेशन का सिमुलेशन आपका फिक्स रहता है। यू जनरली हैव अ एससीसी रिपोर्टिंग, दैट इज जनरली फिक्स। ट्रेजरी स्टॉक कभी कभी आ जाता है। सो बाकी के आपके लक के ऊपर है, लेकिन देयर आर फ्यू जो तो आते ही आते हैं, बाकी पूरे टॉपिक में से कुछ भी आ सकता है। Okay. चलिए देन, सी यू ऑन फ्राइडे, हैव अ गुड डे देन, बाय।